So totally depends on what domain would you like to. Hi Gojo. Gojo Hatke. Alag. How can I join? I already bought courses from the site. Mukul, I'm gonna share the Zoom link. आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? And you'll get an entry in the session. So Mukul from YouTube. Hello YouTube, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? I would like to try Avantika, okay? मैम अभी तक डोमेन नहीं सिलेक्ट किया है, सो संयम एक बात बताओ कि अभी आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो या फिर फाइनल है तो प्रॉपर क्वालिफाइड सीएस की जॉब देख रहे हो, क्या सीन है? राइट. So, namaste everyone. Welcome to today's live session. My name is Pooja Sharma and I'm going to be your trainer for tonight. और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लेने वाले हैं मॉक इंटरव्यूज, जिसमें we are going to select people who want to volunteer, जो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं. And I would really love for you guys to start the video, क्योंकि मैं आपको देखूंगी तो अच्छा लगता है आपसे कि हाँ मैं सामने इंसानों से ही बात कर रही हूँ, ऐसे मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है. That's also not a problem, but yeah, I would really love if you guys can start the video. ठीक है? कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेटा हुआ है, थोड़ा बैठ जाओ भाई, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आफ्टर ऑल हम. सो लेटे हुए हो, बेड पे पड़े हुए हो, ठीक है? अभी फर्श पे तो नहीं होगा क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, फर्श बहुत ठंडा है. सो अपनी रजाई में हो, सो इन वट एवर सिचुएशन यू आर, थोड़ा सा सेटल हो जाओ, राइट? अनीश ने फटाफट से रजाई हटाई है, कह रही चलो यार मैम इतना बोले तो कर ही लेते हैं. अनीश, हाय संस्कृति. So why don't you guys like put your phone somewhere? क्या है कि हाथ में पकड़ के रखोगे हाथ दुख जाएगा. आराम से कंफर्टेबल होके, जैसे मूवी देखने आए हैं, ठीक है, वैसे एकदम हॉरिजॉन्टल कर दो. हाँ, हॉरिजॉन्टली रख दो, किसी स्टैक ऑफ बुक्स के ऊपर रखना है रख दो, आराम से चिलोगे, अपना हाथ भी फ्री कर दो ताकि. और स्पेसिफिकली वो लोग जो इंटरव्यू देना चाहते हैं वो लोग तो जरूर से मेक श्योर करें कि सामने स्टैक ऑफ बुक्स या फिर दीवार के अगेंस्ट में रख दें, ताकि मैं आपके हैंड जेस्चर्स भी ऑब्जर्व कर पाऊं जब आप इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो. ओके, राइट. सो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ इंटरव्यू की बेसिक टिप्स दे दूं आप लोगों को? If not, then we can straight away jump into the mock interviews. उससे पहले सीए बन गए हैं संयम जी, बहुत बढ़िया. अच्छा, सीए बन जाऊंगा 9th को, क्या बात है. कि डोमेन सेलेक्ट करना है, विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट संयम. अवंतिका को ट्राई करना है टिप्स. ओके, सो सिंस दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन फॉर्मेट, आजकल बेसिकली चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर ही कर देती हूँ. लेट मी नो इफ यू गाइज कैन सी माई स्क्रीन. क्या मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है? चलो, cool. So journey from resume to selection. I'm just gonna brief you. ये बहुत डिटेल में नहीं होने वाला है, just to warm you guys up. ये है, सबसे पहले आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना होगा. किस किसने रेज्यूमे यहाँ पे प्रिपेयर करा हुआ है? गिव मी अ वाई इन दी चैट. यस या वाई टाइप करके चैट में बताओ किस किसने अपना रेज्यूमे सॉलिड तरीके से प्रिपेयर कर लिया है. गिव मी अ वाई. ओके, सही, हमने अभी नहीं करा है, डोमेन भी सिलेक्ट करना है. कूल. तो रेज्यूमे कैसे जो है करना है, अब आपको मैं बताती हूँ. जिस जहां से आपने ये सेलेक्ट करा है ना मास्टर क्लास, जिसमें जो आपने लाइव सेशन ज्वाइन करा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको थिंकिंग ब्रिज पे ही जाना है. जो हमारा फ्री करियर मास्टर क्लास है ना, ये फ्री कोर्सेज में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फ्री करियर मास्टर क्लास में. यहाँ पर हमने बहुत सारे रेज्यूमे टेम्पलेट्स अपलोड कर रखे हैं. सो अपना रेज्यूमे आपको मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 2 डोमेन के लिए 2 डिफरेंट रेज्यूमे बनाएं. ठीक है? अगर आप आर्टिकलशिप करना चाह रहे हैं तो आपको आर्टिकलशिप स्पेसिफिक जो है अपना थोड़ा सा रिज्यूमे, आपका जेनेरिक हो सकता है बट फिर भी स्टफ इन द कीवर्ड्स दैट आर मोर रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर डोमेन दैट यू वांट टू गेट इनटू. अगर आप क्वालिफाइड सीए बन जाएंगे या फिर बन गए हैं, स्विच करना चाह रहे हैं,
इन दैट केस जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हैं आपको उस डोमेन स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना है. प्लीज शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट 2 domains बिकॉज beggars can't be choosers, right? So अगर मान लो किसी बड़ी कंपनी में वेकेंसी निकली हुई है और आपने अपने रिज्यूमे पे लिखा कि मुझे तो ऑडिटिंग का ही एक्सपीरियंस है, मैं ऑडिटिंग में ही जाना चाहता हूँ, तो लेकिन वहां पर वेकेंसी मान लो इंटरनल ऑडिट की है, सो यू विल लूज योर चांस अनटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर कि भाई नहीं मुझे तो ऑडिट में ही जाना है, मैं क्यों अपना इंटरनल ऑडिट में जाके टाइम वेस्ट करूं, देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट इफ यू आर in the initial phase of your career and you are okay with trying out different domains, then in that case at least 2 domains आपको finalize करने हैं और 2 different resume आपको बनाने हैं. So my point was कि आप यहाँ पर माई कोर्सेज में जाकर देखेंगे आपको डोमेन स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट का अलग, स्टैट ऑडिट का अलग, हर रेज्यूमे आपको मिल जाएगा. उसको डाउनलोड करो वर्ड फाइल को और वहां पर अपनी डिटेल्स अपडेट करना स्टार्ट करो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां पे ऐड करना चालू करिए डिटेल्स. ऑनलाइन असेसमेंट्स कई सिचुएशंस में होती हैं, कई केसेस में नहीं होती हैं. दीज आर बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, जहां पर आपका एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत टेक्निकल, आपका डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें टेस्ट कर सकते हैं. देयर इज दिस वेबसाइट नेम्ड एज इंडिया बिक्स और आप इस वेबसाइट पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. आप अपने क्वेश्चंस वगैरह, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें आप इस पे प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे सीरीज हैं क्वेश्चंस के एंड इफ यू विल प्रैक्टिस आपका आई थिंक लाइक 1 दिन में एटलीस्ट या फिर 2 दिन में आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं. अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते भर के लिए डेली बेसिस पर 30 मिनट्स 40 मिनट्स की एक्सरसाइज आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन का हमारा एक पिछला सेशन भी हुआ था, आप उसको जाकर देख लीजिए. ग्रुप डिस्कशन में आपको डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है सो दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ डिसेंट कमांड ओवर योर लैंग्वेज एंड सुपर्ब कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास नॉलेज भी कम है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, यू आर डेफिनेटली गोना मेक इट थ्रू द ग्रुप डिस्कशन. कमिंग हियर पर्सनल इंटरव्यूज. पर्सनल इंटरव्यूज आपका डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि एक पर्सनल इंटरव्यू होता है. देयर आर सीरीज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स दैट हैपन. सबसे पहले यूजुअली एचआर राउंड होता है. पहले एचआर राउंड भी फेस टू फेस इंटरव्यूअर के साथ, एचआर के साथ होता था, बट आजकल ये टेलीफोनिक राउंड में ही जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है, जितना मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है. सो व्हाट हैपेंस इज जहां पर भी आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ है, द एचआर इज गोइंग टू कॉल यू एंड शी इज गोना आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन ऑडिट, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन जीएसटी, and they'll ask about your availability for the interview, so on and so forth. So it is going to be the easiest round because यहाँ पर आपको you just have to be yourself. जैसे हम किसी भी फोन पे बात कर रहे हैं ना, या फिर जैसे हम किसी से नए मिल रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं एंड वी टेल देम अबाउट आवरसेल्फ, दैट इज इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ. लेकिन लोग यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है. सो टुडेज इंटरव्यू, टुडेज मॉक इंटरव्यू विल बी अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड का कॉम्बिनेशन होगा बिकॉज आई वांट यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर द बोथ, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आपका टेलीफोनिक राउंड में ही इंप्रेशन खराब हो गया तो टेक्निकल राउंड के लिए कॉल नहीं आएगा ना. So the next is technical round, which usually happens with your immediate reporting person, यानी जिनको आप रिपोर्ट करेंगे. एंड यूजुअली जब आपको इस इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या ईमेल आएगा, कॉन्फर्मेशन आएगा, इनको सीसी में मार्क किया होगा, तो आपको सबसे पहले जाकर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लेनी है, कौन है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है. यू कैन स्टडी अ बिट अबाउट देयर एक्सपीरियंस, वेयर ही हैज वर्क, हाउ मच एक्सपीरियंस दैट पर्सन इज हैविंग. ऑब्वियसली जब आप देख लेते हो कि भाई सामने वाला बंदा तोप है, तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो जाता है, राइट. दे हैव एन अनड्यू एडवांटेज ओवर यू दैट दे आर गोइंग टू जज यू एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड यू वेदर यू आर वर्थ इट फॉर द पोजीशन और नॉट. बट कोई बात नहीं, वी आर एब्सोल्युटली गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सेम. And then the last round is usually for formality, but trust me, I have seen people not making it through this round, and I am one of them. To be honest, सारे rounds clear हो जाते थे, पार्टनर राउंड पे जाके जो है आगे रिस्पॉन्स नहीं आता. एंड देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स. यहाँ पर पार्टनर राउंड के बाद भी अगर आपका कॉन्फर्मेशन नहीं आ रहा है, दैट डजंट मीन दैट you are not good enough. It's just that maybe you won't fit in the culture, या फिर you know they had 5 openings and 3 other people they've already filled in, ठीक है. तो ये सब रीजन हो सकते हैं. कॉम्पिटेंस यहाँ पर आपका कोई इशू नहीं होने वाला है. इफ यू हैव क्लियर टेक्निकल राउंड, ट्रस्ट मी, द 90% ऑफ द जॉब इज डन, ठीक है. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. रिजल्ट का नहीं बट रेज्यूमे का टेंशन हो रहा है. सही है, डोंट वरी, रेज्यूमे भी बनवाएंगे, डोंट वरी.
My experience, 1 year in IT GC, okay, audit, and 2 year CA firm, but now I want to start teaching. Okay, that is interesting. So Rahul, we can talk about it अभी थोड़ी देर में. क्या टेम्पलेट यूज करना चलता है, कहाँ गया, चलता है अकॉर्डिंग टू वंस प्रिपेयर करना चाहिए. टेम्पलेट जो हमने डाल रखे हैं ना संयम, जो हमारा फ्री करियर मास्टर क्लास है उसमें टेम्पलेट्स डाल रखे हैं, आप उनमें से जो भी आपको रेलेवेंट लगता है वो आप कर लो. आजकल एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू पास होता है यूजुअली, अगर आप करियर पेजेस पे जाकर अपलोड कर रहे हो. इफ नॉट, इफ समबडी इज रेफरिंग यू देन दैट्स अ डिफरेंट केस, बट अल्टीमेटली आपको अपना रेज्यूमे बहुत सिंपल रखना है, बहुत टैकी नहीं बनाना है, बहुत सारे कलर्स नहीं यूज करने, जस्ट द बेसिक्स आई बिलीव. एंड उसमें लिखा क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आप उसको मास्टर करिए. एस्थेटिक्स एक बार को ऊपर नीचे होगा फिर भी चल जाएगा. मैम ट्रांसफर केस है, 6 months हुए हैं, ग्रुप 2 का रिजल्ट अवेटेड है एंड अटेम्प्ट्स भी हैं G2 में, ग्रुप 2 में. मैं बिग 4 जा पाऊंगा क्या या फिर बिग 6 में? ओके अभिषेक, दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन. हम इसको टुवर्ड्स द एंड लेंगे. आई थिंक 9:15 हो गए, सो वी शुड स्टार्ट विद द मॉक इंटरव्यू, ताकि हम लोग, प्री रिजल्ट ड्राइव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मयंक, काफी पोस्ट देखे हैं मैंने इंस्टाग्राम पे, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप्लाइंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद our mock interviews. Who wants to go first? Please raise your hands. I will unmute you. You'll have to start your video and then we'll start off with the mock interview. Who wants to go first? मेरे पास अवंतिका का आया था, मेरे पास आई बिलीव एक आध का और आया था, थोड़ा चैट में ऊपर चले गए हैं. अनीश का आया है. ओके ओके ओके. Who else? सिर्फ अनीश को जाना है? Nobody else? No one else? संस्कृति, ऋषभा जैन. ओके. I thought संस्कृति you also wanted to go. प्रियंका प्लीज रेज योर हैंड. जहां पर आपके पास रिएक्शंस का ऑप्शन आ रहा है वहां पे रेज योर हैंड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? सो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सबसे पहले अनीश का आया था, तो हम सबसे पहले अनीश को मौका देंगे. अनीश प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, स्टार्ट योर वीडियो एंड लेट्स टॉक टू यू. लेट्स टेक योर मॉक इंटरव्यू. आवाज आ रही है अनीश आपको? कुछ बोलो एक बार. हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल, परफेक्ट. तो कैसे हैं आप अनीश? आई एम फाइन, हाउ आर यू मैम? ऑल गुड. कैसा था आपका न्यू ईयर प्रिपरेशन? इट वाज ग्रेट. सेलिब्रेशन, प्रिपरेशन. एक तो इतना आदत हो गया है ना सीए में प्रिपरेशन वर्ड यूज करने का, सेलिब्रेशन भी प्रिपरेशन ही लग रहा है. एनीवे, सो अनीश पूरा नाम बताइए अपना. अनीश गर्ग. अनीश, यू कंफर्टेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? या, आई एम कंफर्टेबल. ओके. कौन सी फर्म में जाना चाहते हो? व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी? आई थिंक बिग 4. बिग 4 में कौन सी? एनीवन. फिर भी जस्ट पिक अ नेम, जस्ट फॉर द रेफरेंस. ईवाई. ईवाई, चलो. तो आपको ईवाई के लिए कॉल आया है एंड आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है. कौन से डोमेन में जाना चाहते हैं आप? स्टैट ऑडिट. स्टैट ऑडिट, बहुत बढ़िया. आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. सो मैं वी आर गोइंग टू लाइक स्टार्ट. एक बार मैं बस यूट्यूब देख लेती हूँ. हाय यूट्यूब, हाय युवराज. सबटाइटल्स आर नॉट मैचिंग. आई डोंट थिंक देयर आर एनी सबटाइटल्स. अभिषेक ट्रांसफर केस. अभिषेक आपका हम डिस्कस करते हैं, अभी अलग से केस है, ठीक है? सो वेलकम अनीश, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? I'm also doing well, thank you. Anish, let's start with your introduction. Okay. So my name is Anish Garg. I live in Baltara, Punjab. My father is a businessman. I have done my schooling from Chandigarh, securing 9.6 CGPA in 10th and 93.4 percentage in 12th standard. Afterwards, I have been graduated from Punjab University and cleared my CA exam with a total of 7 exemptions. I have done my articleship from Consulting and Associates. After that, I have joined Omke Shubham and Associates. My major working areas was direct tax and audit.
I have worked on ITR filing, tax audits, TDS TCS returns of individuals, partnership firms, LLPs, and private limited companies. Further, I have worked on income tax appeals, submissions, rectification, application, tax compliances, etc. In the audit domain, I have done statutory audit as well as internal audit of various companies having turnover ranging from 50 crore to 300 crore. The major clients I have served are August Medical Services Private Limited, Classic Bitumen, Classic Petrochemicals Private Limited, Waste Distilleries and Breweries Private Limited, Agrestel Organic India Private Limited, and Sohana Hospital. Further, I have led internal audit of two major government entities, namely Haryana State Legal Authority and Haryana State Warehousing Corporation, having their presence all over Haryana State. Furthermore, I have also given presentation on internal audit report of a private limited company to a foreign investor and been praised by my senior and board of director for my observation and completion of report in a tight deadline. That's all my experience in a CA firm and in my article sheet. Hmm. Anish, you do have rich experience in your articleship. I must commend you for that. Uh, so tell me, why statutory audit? You have worked in all the domains that one could possibly think of, be it taxation, be it internal audit, but why are you so keen upon joining the stat audit department? The tax and the I think the main work of a CA is to check whether the balance sheets are true and fair view, whether they represent true and fair view, and the stat audit will cover all the items which I am interested in. As in the stat audit, uh, we have the bird eye view of the financial statement, and we have to check from start to end all the aspects of the financial statement. That's why I am more interested in the stat audit. Uh, Anish, I would have loved you to join the stat audit department, but currently, we also have vacancy in direct tax, and I believe you can be a really good fit there. Would you be open to exploring that as well? I think uh, I am more suitable for statutory audit, but if the vacancy in direct tax is available, I can go there. Uh, Anish, your father is a businessman, as you mentioned. Yeah. Could you explain what kind of business and why are you not keen on joining his business and why do you want to take the job? Okay. So as I said that we have a shop in Baltana only, and we are currently in the business of disposable items. And it is the work of 7 days a week, and it is a duty of 12 hours per day. And I am more keen towards my CA work, not towards my business work. That's why I am more enthusiastic and more lean towards the CA firm in the Big Four. Okay. Tell me a bit about your strengths. What are your strengths? Okay, so if I say my strengths are critical thinking, I'm highly motivated. As during my articleship, I can say for that, say for sure, I have the most work at one time, and every one of my friends will go home after 5 p.m. But I have to stay there in the firm and I have to complete the work. I don't did not get demotivated during that period. That's why I can say that I am highly motivated and I am punctual because I have met all the deadlines which I have been given during my articleship period and during my experience in a CFO. Can you think of any weaknesses? I think I am a little reluctant to ask for assistance from others, but I am slowly improving it by communicating with my friends and colleagues.
But that's going to be a big challenge, you see, because auditing or direct tax, these profiles are very collaborative. You have to collaborate with people, you'll have juniors, and you'll have peers who you have to work with. So that can be that can be quite challenging. Yeah, this problem is more in my articleship period. But as on going towards after becoming CA, I am not reluctant to ask from others. Okay. Let's move on to the technical round then. Yeah, sure. Uh, Tell me a bit about audit assertions. Okay, so assertions are the can I get a minute? Yeah, sure. No worries. Take your time. Assertions are the representations made by the management, which are checked by the auditor to to check whether the financial statements are free from material misstatements. There are different types of assertions like completeness, accuracy, cutoff, rights and obligation, valuation, Hmm. existence, and disclosure. Okay. So, how do you assess risk of material misstatements? By applying risk assessment procedure, which is known as RAP, we can assess, we can understand the entity and its environment, including its internal control, and we can get to know the and but whether the internal control are effective or not, and then we can see whether the risk of material misstatement exists or not. Okay. Um, so tell me, what is the requirement of tax audit under Section 44AB when the turnover is less than 10 crores? Sorry, can you repeat the question? What is the requirement of tax audit under Section 44AB when the turnover is less than 10 crores? Are you asking for the exemption? Uh-huh. Actually, if the turnover is more than 1 crore, we have to mandatory tax audit under 44AB. But if the turnover is less than 10 crore and if the cash receipt and cash payments is up to 5% of the total payments and total receipts, then we do not have to tax audit. Okay. All right. Tell me a bit But about sorry, I'm cutting you. But but in the recent amendment in Finance Act 23, the turnover limit has been increased to 2 crore and 75 lakh for the professional. okay. Have you worked on MS Excel? Yes, I have worked. Okay. Um, can you tell me what is conditional formatting and how it is used? So if you go on the home ribbon, you can see the conditional formatting in which we can highlight the cells of duplicate values, or or there are multiple options which we can use in the conditional formatting. Hmm. Actually, currently I am only able to No problem. able to recollect. Yeah. Hmm, hmm, hmm. Hello. Okay. Yeah. Actually, I am only able to recollect the duplicate values. Hmm, hmm, hmm. Right. Um, Tell me, have you used XLOOKUP? Have you used XLOOKUP and how it is going to completely replace uh, VLOOKUP or HLOOKUP? Okay. So the XLOOKUP function is not available in Excel 2019 version. Hmm. Uh, and XLOOKUP will actually, I have seen the YouTube video for the XLOOKUP which shows that XLOOKUP will replace VLOOKUP and HLOOKUP both, because it will do the work of both the items. Hmm. But I have used VLOOKUP on the Excel uh, during my articleship and during my job in the CFO.
No problem, no problem. Um, so I was asking, tell me about Ind AS 115. Okay, so should I give the overall view of the India's Yeah, just 115? tell me a little bit about what exactly is Ind AS 115. Okay, so first of all, India's 115 is the revenue from contract. It has 5 steps. First of all is the identification of contract. Second, identification of performance obligation. Third is determination of transaction price. Fourth is allocation of transaction price in different performance obligation. And fifth one is recognition of revenue. So in the first step, we will see whether the contract is contract exists or not. For that, there are some conditions which have to be fulfilled, like the rights and obligations should be established, the payment term should be established, Mm-hmm. and there should be the payment है वो आनी चाहिए. There should be a Hmm. that's the conditions. Second one is the Hmm. identification of performance obligation, in which we have to see whether the goods are distinct or whether we have a series of goods or services. If the distinct goods and services are provided to the customer, then the revenue will be recognized according to the distinct when the distinct goods have been served to them or service have been served to them. And if the series of goods or services are provided, Okay, then we Anish. will. Thank you. I got the answer. Um, Tell me, where are you based out of currently? Currently I live in near Chandigarh. Okay, okay. Sorry, what is your So we have question? openings. We have openings in Gurgaon, Mumbai, Pune, and Bangalore location for EY. So which one would you Okay, so be interested in joining? I will be interested in joining Gurgaon location. Okay, okay, all right. And it will require a lot of travel. Your job profile will require a lot of travel. I hope you wouldn't mind that. Yeah, I wouldn't mind. Okay, all right. Thank you so much. It was nice interacting with you. Thank you. Thank you. भाई जोरदार तालियां हो जाएं अनीश के लिए अनीश तुम वीडियो अभी ऑफ मत करो ऑन करके रखो लेट एवरीबडी प्रेज यू लेट एवरीबडी से नाइस थिंग्स अबाउट यू वाओ अनीश कितना बढ़िया इंटरव्यू दिया आपने सो कॉन्फिडेंट गाइस बी अ लिटिल स्पोर्टी एंड चैट में जरा तारीफें लिख दो ग्रेट वेरी वेरी गुड कॉन्फिडेंस अमेजिंग हाँ जी वेरी गुड well done good awesome very well bro great person to work with excellent confidence was too good dekha very talented anish you tried answering all the questions amazing very good interview smoothly done employee of the year लो भाई award आने शुरू हो गए हैं तुम्हें uh, yes absolutely such confident answers and good gesture well done the speed was manageable very good so yes I have same feedback as everybody great communication skills anish great confidence you had such a good hold over the work that you've done over the topics एंड ऑडिट मास्टर क्लास लिया हुआ है या फिर ऑडिट इंटरव्यू गाइड बुक पढ़ा हुआ था मुझे ऐसा भी थोड़ा फील आ रहा था ठीक है क्योंकि थोड़ा सा टोन मैच कर रहा था आंसर्स का बट ग्रेट जॉब डन मैन आई रियली विश दैट यू do get selected in one of the big fours and the work that you've done the way you represent yourself I'm 100% sure that you're gonna get through but yeah सो एक दो बस फीडबैक बता देती हूँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे ठीक है फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन दैट वाज सुपर फाइन आई थिंक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस one thing that I believed you should not have done was naming the clients. So, body companies may usually we don't name the clients, we name the industry. Okay. So, if you have a clean sheet from your previous organization की कोई problem नहीं है क्योंकि क्या है कि you when you are entering into an employee arrangement, so
You also sign confidentiality clause. So it's recommended कि आप जो confidential चीजें हैं वो ना लें. Industry 100% mention करो, ठीक है. But about client confidentiality, Naveen Kumar, do you have anything to write? Please write full sentence. ठीक है. So why stat audit? तो यहाँ पर भी ना, मतलब मुझे वो वाला पोर्शन अच्छा लगा जहां पे आपने बोला कि कवर्स ऑल द आइटम्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड मेन वर्क ऑफ सीए. तो बस ये लाइन आपको नहीं बोलना चाहिए था कि मेन वर्क ऑफ सीए इज टू मेक चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, क्योंकि दैट्स नॉट द मेन वर्क. बहुत सारे काम है, उनमें से दिस इज वन ऑफ द वर्क्स दैट, ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि well, the really good thing about statutory audit is it covers end to end all the items that I am personally interested in, and not just that. I am very interested in exploring different businesses, studying about them, and obviously provide value to all the stakeholders concerned. ठीक है. So इस तरीके से अपना आंसर थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो. ठीक है. He should have said main work of auditor. Yeah, right. यस, ये आर्टिकलशिप सीकर्स के लिए है. वैसे ही अगर आप आर्टिकलशिप के लिए तो मैं नेक्स्ट आपका ले लेती हूँ. सो व्हाई नॉट बिजनेस? आंसर ये वाला इंप्रूव हो सकता था, क्योंकि आपने बोला कि 12 घंटे, ऐसा लग रहा था कि आप डर रहे हो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करने. और रियलाइज आई थिंक आपको भी हो गया था व्हेन यू वर सेइंग दैट, कि पता है 12 घंटे 7 दिन काम करना पड़ता है, नहीं जाना मेरे को वहां पे, ऐसा फील आ गया था. ठीक है. सो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके बोल सकते हो. वेल, सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव सीन माई father, or if you have any other sibling, take care of the business. And I was always more interested in finance side of things. I used to take a look at the books of accounts of my father's business, and that used to really interest me. And that's how I got to know about the chartered accountancy course. My friend's father, my father's friends recommended me. That's how I got into. And I'm really, really passionate about this. And yes, I want to gain more expertise, gain more experience over the years, and make add value to the organization as well. So इस तरीके से कर सकते हो. That my interest, I think, over the time I figured out they were more aligned towards finance than the business. बुराई नहीं करनी है. एक प्रोफेशन की अच्छाई करने के लिए दूसरे प्रोफेशन की बुराई कभी नहीं करनी है. स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बोला. नो प्रॉब्लम देयर. वीकनेस वाज आल्सो फाइन. और वो सही कि आपने बोल दिया दैट आई एम वर्किंग ऑन इट. ऑडिट असर्शन, टैक्स ऑडिट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आई थिंक टेक्निकल में मुझे आज सच कोई भी इशू लगा नहीं. आई लव दैट यू इंक्लूडेड अमेंडमेंट, बट समबडी इन द चैट वाज सेइंग दैट जो अमेंडमेंट आया है टैक्स ऑडिट के लिए वो 44 AD के लिए है, 44 AB के लिए नहीं है. सो यू मे वांट टू चेक दैट. ठीक है, फैक्ट चेक कर लेना अभी जाके. प्लीज टेक संस्कृतीज. संस्कृति ने तो हैंड ही नहीं रेस किया हुआ. जूम पहले अपना नाम बताओ. कैन आई ट्राई नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू फॉर आर्टिकलशिप? यस अवंतिका. नहीं, एक सेकेंड. अवंतिका आपसे पहले ना, अच्छा आप आए नहीं थे शायद से, वैदेही ने पहले बोल दिया था. चलो कोई नहीं. आई थिंक अवंतिका बहुत पहले से बोल रही है. अवंतिका का ले लेते हैं. वैदेही आपको उससे काफी वो आ जाएगा, लाइक इनसाइट्स मिल जाएंगे आपको. सो अवंतिका, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो. Yes, the session is for chartered accountants as well. सिमरन, अभी जो हमने इंटरव्यू लिया वो एक टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. उनका रिजल्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली सीए बन ही जाएंगे वो. ठीक है. सो दैट वाज कंसर्निंग दैट ओनली. अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था पुचार का. Can you please clarify this session is only for CA final or CA cleared students, or articleship seeking ones can also join? Yes, Pushar, the people who are seeking articleship also can join this session. In fact, the next mock interview that I'm going to take will be concerning articleship. ठीक है. So everybody can join. कहीं ना कुछ insights definitely मिल ही जाती हैं. Resume and preparation नहीं किया है मैम. Can I give interview now? Will it be fine? रेज्यूमे तो देखो अभी मैं मांग भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम अप विद क्वेश्चंस फ्रॉम वट एवर यू आर सेइंग. ठीक है. सो अदरवाइज बेटर वही होता कि इंटरव्यू जो है रेज्यूमे में से लिया जाए. बेस्ट तो वही होता है. बट सिंस अभी इट विल बी हैसल, इंटरव्यू रेज्यूमे भेजोगे, उस डिटेल्स हाइड करना पड़ेगा. आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टास्क. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज whatever you're saying, and I'm going to use that as a base to build more questions from that.
ठीक है. So Avantika, please start your video. Let's start your interview, madam. अवंतिका जी, कहाँ पे हैं आप? Hello. About the vacancy. अच्छा हाँ. What should be the answer? आपने सही तरीके से आंसर किया था अनीश. आपने बोला कि well, I am more inclined towards statutory audit. But since I have worked in direct tax department also, and I loved doing that work also. I loved when I used to represent in front of the income tax officers, when I was drafting the appeals, etc. I believe I enjoyed that work also. Could you share more details on that? You know, put them in the situation. Could you share more details about like that particular role also? So that you could have done. क्योंकि ऐसे कोई आपका टेस्ट लेना चाह रहा है कि पहले आपने बता दिया कि हाँ देखना है कि जो करंट प्रोफाइल है उसमें, बट अभी क्या है कि ना इतनी ज्यादा वेकेंसीज आ रही है, इतनी ज्यादा जरूरत है, तो कोई ब्लफ नहीं करता. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि क्या जो आपका रिस्पॉन्स होगा. सो यूजुअली ये पहले ब्लफ क्वेश्चन की तरह यूज किया जाता था कि देखते हैं कि बच्चा क्या होता है, बट अभी देर आर जेन्युइनली रिक्वायरमेंट्स इन अदर फील्ड्स आल्सो. तो वहां से रिज्यूमे सब बना चुकी हूँ. वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड. Vaidehi, ma'am, I've prepared my resume, so can you review it too? I'll share it in the chat box. हाँ शेयर कर दो एक बार वैदेही. Akash, take my interview next. I have given intermediate exams and currently looking for a top firm to begin my articleship journey. Avantika, video on कर लो भाई, नहीं करना क्या start? We are waiting. Otherwise फिर मैं वैदेही को बोलूँ या तो. चलो unmute करो. अवंतिका जी. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. फोन कहीं पे रख सकते हैं या हाथ में पकड़े पकड़े रहोगे? कहीं रखा हुआ है ना? हाँ. I want to see both of your hands. Okay. Okay, cool. So Avantika, बताओ आर्टिकलशिप के लिए you're looking for opportunities for articleship? Yes, yes. Okay, कौन सी फॉर्म में जाना चाहते हो आप? Big Four. बिग फोर में कौन सी? PwC. PwC. Okay. कौन से डोमेन में जाना चाहते हो? I'm looking for statutory audit. स्टैट ऑडिट. ओके. ऑडिट मास्टर क्लास किया है अभी आपने या फिर? नहीं, मैंने नहीं, नो प्रॉब्लम. आई वाज जस्ट आस्किंग कि मैं थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल फिर उस हिसाब से बढ़ा देती. कहाँ पे रहते हो आप अवंतिका? वेयर आर यू फ्रॉम? I live in Salem, but I wanted to be in Bangalore. You wanted to be in Bangalore. Okay, so we are going to Bangalore PwC for SAT audit department for articleship. And one more thing I wanted to ask. So you've cleared your intermediate or you're waiting for the results? I'm waiting for my result. I've already cleared my group 1. I'm Okay. waiting. Okay, right. I have enough information. Thank you. Right. Hi, Avantika. Welcome. How are you doing? I'm good. Thank you. Tell me something about yourself. Sure. My name is Avantika Jain. I've recently written my intermediate exams, Group 2, and I'm waiting for its result. I've already cleared my Group 1 in November 22, and I've cleared my foundation in the very first attempt. I did my schooling from CUNY Matriculation. Some of my interests include calligraphy and bullet journaling. I have learned through these art forms that we can develop patience and creative thinking. With the right skill sets that I'm going to bring to this firm, I think I am quite eligible and qualified for this role. Thank you. Okay. So Avantika, tell me, why did you choose CA as the course to pursue? You could have done any course. You could have done simple BCom and gone for your masters later on. Why CA? Well, I think that this profession is a bit tough, as everybody says, but this profession has a lot of respect and people look up to it. You know, there is a whole new level of respect for a CA.
And that is one thing that I really want. And that's why I have chosen this career. Moreover, it is also a very good thing that we can bring a good change in the society by being a moral checker in the field of finance. Okay, okay. Right. Um, what was your favorite subject in intermediate? Well, obviously, I liked auditing and assurance most. Other than that, I think एग्जिट हो गया ना अवंतिका का या फिर मेरे इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है? कैन समबडी कमेंट लेट मी नो. हाँ, गॉट डिस्कनेक्टेड ना. मेरा सही चल रहा है ना इंटरनेट. कूल. Okay, I don't know how much time will Avantika take, so let's start with Vaidehi. Vaidehi, do you wanna start? Okay, chalo. So Vaidehi, I've asked to unmute you. Unmute yourself, please. And I have your resume as well. So that'll be better, I guess. Start karo video. And I'm pinning you so that everybody can see you. Unmute kar lo ek baar. कर लो अनम्यूट. क्या हो गया? हो नहीं रहा क्या? ऑप्शन नहीं आ रहा? सेकेंड. देखो अभी आया. Yes, ma'am. ओके. Am I audible? या you're audible. You're more than audible. Okay. कहाँ से हो वैदेही? बताओ. Good evening, ma'am. I'm Vaidehi Dasad and I'm from Jaipur, Rajasthan. क्या बात है. Feels like home. Articleship, right? Yes, ma'am. क्या स्टेटस है इंटरमीडिएट का? I've cleared my first group in May 23, and I've actually started my articleship. Okay, so this is a transfer case. Yes, ma'am. And I've given my group 2 in November 23. So waiting for the results. Okay, no problem. कोई बात नहीं है अवंतिका. अब 5 minutes वेट कर लो. 5 minutes में विल रैप अप Vaidehi's and then we'll continue. ठीक है? ट्रांसफर केस है. और कौन सी फॉर्म में जाना चाहते हो? Ma'am, Big Fours. नाम बताओ एक का. EY. EY. डिपार्टमेंट? Internal audit. इंटरेस्टिंग. Ma'am, actually, I'm dicey between the stat audit and internal audit, but my first preference is internal. But I'd love to go for stat audit too. Okay, okay. चलो फिर let's start. ठीक है? So hi Vaidehi, welcome. How are you doing? Good evening, ma'am. I'm doing great. How are you? I'm doing well. Thank you so much. Please introduce yourselves. Okay. My name is Vaidehi Dasad, and I've currently cleared my first group of intermediate in May 23 attempt, and I've given my second group in November 23. I've done my schooling from Subodh Public School, where I've always been active in, apart from my academics, good academic score, I've always been active in the extracurricular activities. I've also, after even in my CA journey, I've always been active with the ICI events and public speaking events and competitions that I've always held. Now, as far as my articleship is concerned, I'm interested to go in the internal audit domain and to upskill myself and to build a career in the same industry. Okay. So Vaidehi, tell me why CA? Okay. So from starting, numbers are something that has always interested me. So the CA, it always provides you a mix of practical as well as the theoretical concepts, and the amount of respect and the network that you build with this course and the professionalism that you get from this course has always interested me in a form. So I think this course is for me, and I've pursued it
passionately. Right. Um, you said you like numbers, right? Yes, ma'am. So you could have pursued your bachelor's in mathematics also, right? So Yeah, but the why didn't you? businesses and finance and the way the businesses operate, actually, my family is also from a business background. So I've always seen how the businesses work, how the things are done. So that is something that has always interested me. So Okay. I want to do CA so that I can more brush up on my skills on the things of finance and this. Okay. Got it. Got it. Tell me a bit about your family business. Okay, so my family is basically into the manufacturing and online business of they basically sell uh, clothes and garments on online on platforms like Myntra and Amazon, Flipkart, etc. Okay. And how long you guys have been in the business? It's been about 2 years since we went online since after COVID-19, and before that we had a complete offline store in our home city, Jaipur only, And for how long? for about 10, 15 to 20 years, I guess. Okay. Yeah. So why are you not interested in joining the business? Since you like it so much, you've been around the business for quite a long time now, I believe. Actually, my father's business is something that is the field that does not interest me. As I've mentioned, that numbers and finance interest me more. So that is why I pursued CA and I wanted to grow myself in this field. That is why. Hmm, 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 hmm. You said you're interested in internal audit, right? Yes, ma'am. What aspect of internal audit you like the most? Okay, so basically, internal audit is making sure that the processes and systems within the organization are working properly and what are the risk and controls if they're working effectively or efficiently in the organization. So internal audit as a domain actually I think will help me to go and learn in depth about a particular business. So that is why internal audit interests me. uh, Okay. Okay. Do you know about IFC? Internal financial controls. Mm-hmm. Do you know Yes, ma'am. about, tell me something about it? I'm not really sure about it, but I'll try to answer. Hmm. Internal financial controls are basically like in that we check that the financial controls implemented by the company are working effectively or not. So that is what we check in. Matlab, that is what is associated with internal financial controls, to my knowledge, I guess. Okay, okay. Uh, do you have any idea about what a value chain is? Um, Not as of now, but the value chain basically includes how the processes are like into within and like how they move outside the organization, how Okay, the no movement problem. of yes, please. No problem. Uh, tell me what is the major difference between internal audit and statutory audit? Statutory audit is it concerned with whether the financial statements represent true and fair view of the financial statements. And while in the internal audit, we check the whether the controls or the procedures implemented, yeah, which are there within the organization are working effectively or not. Hmm, hmm, So hmm, hmm. so basically in stat audit, we are concerned with the financial items of financial statements only, but in Hmm, internal audit, we are concerned with the uh, controls and processes of the organization as a whole. hmm, 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 hmm. Okay. How strong are you in accounting? I think I rate myself 3.5 out of 5 or 4 out of 5 Okay. Tell me, how do you create, what's the general journal entry for creating provision? for provision. Okay. P&L to provision. Okay. Right. Do you know how to work on MS Excel or any other tools? Are you familiar with any other Uh, tools?
MS Excel has been one of my weakness, but I've taken a course from Hmm. Skill 91 only, the MS Excel course to develop my skills on that. So Hmm. I'm working on it currently. Okay. Would you be comfortable if I ask a couple of questions to test? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me what is the sum if function? Sum if function. Okay, so basically the sum if function is used to get the sum of the values in which includes a certain condition. Hmm. Uh, Right. for example, we have to sum. For example, if the table is given and we have to get the sum of the people of the salaries who are more than 50,000, for example. So we can use Okay. that function uh, to Got get there. Yes, ma'am. got it. Got it. Explain VLOOKUP. VLOOKUP. Okay, so VLOOKUP is a function in which can be used to extract a value from a certain table. Hmm. Uh, Ma'am, can I get 1 minute to recollect it? Yeah, yeah, sure. Don't worry. Um, Ma'am, actually, I studied it, but I forgot. But No I worries. can, You don't have if to I'm give given me. a, हाँ ऐसे if एकदम I'm से given a बताना नहीं है कि practical, एग्जैक्टली ये रटना नहीं है उसको whatever logic you believe what's coming in your mind just say that don't worry about it actually, if I'm given a practical problem, then I can solve it using VLOOKUP create a completely. problem and then solve it for me कहीं तो अप्लाई किया होगा ना वी लुकअप डेटा पे Hmm. क्या क्या Okay. कंडीशन था वो कैसे था Um, so it was basically like okay, while I was doing the course, we were given a certain set of table. hmm. In that, we were asked to. Uh, sorry, ma'am, but I'm not able to No recollect it. problem. So Yeah. basically, by applying VLOOKUP, you're looking for certain values. You have to select an array of a database, right? And from that database, you're looking for values. You give the condition that find me this, and you apply. So you've probably used it. Maybe you're just not able to form the Yes. sentence around it. So it's fine. All right. Tell me about your strengths. So I think I'll my basic one of my most one thing that I think my strengths are is the that I'm a very positive attitude person that I always take things positively. As you can see in my resume too, I have good leadership skills. I've always handed on to the I've always handled the task well, which includes the leadership skills. I also have very collaborative thinking of working together as a team. Um, Also, I think my problem solving skills and the technical skills give me an edge over other uh, candidates. I see that this yours is a transfer case, Vaidehi, right? Yes, ma'am. So why are you looking for a transfer? The basically, I want a articleship in one of the big firms. So the reason for choosing the big firms is big firm like EY is the kind of exposure that I will get from working in those firms. The current firm which I was working uh, was not up to the was not giving me the proper exposure and the field which I wanted to be in. That is why I wanted to take transfer to a place that could provide me good exposure and so that I can work upon myself and my skills properly. Okay. Okay. You've been working there since September, I believe. Yes, ma'am. What all have you learned in these 2 to 3 months that you worked? Ma'am, so basically, we have been filing the. So basically, my I've taken a leave for 1 or 2 months. So I worked only for like 1 or 2 months there. But thereon, I was asked to do some workings on the Excel and prepare the financials in the Excel. And my work basically included, but revolved around the financial statement part only.
Okay, no problem. Um, why EY? Why EY? Okay. Why So only EY, EY? We have, so many different companies, but what is so interesting about EY? What is so fascinating about EY that you want to join EY? okay. So as I've already mentioned, that EY is one of the big fours, and which works in which has the very wider base. The way it creams up the people, like when the people go there, and the person they turn out to be after joining a big firm like this, the clients they have, the way of professionalism, and the culture that they jot that they cultivate between the people. So I think that is what fascinates me about EY so much, and I want to join it. All right. थैंक यू सो मच वैदेही. सब लोग वैदे के लिए क्लैपिंग कर दो भाई चैट में और फीडबैक दो वैदेही को. हाउ डिड शी डू? आई थिंक यू वर अमेजिंग वैदेही. सो लेट्स हियर फ्रॉम एवरीबडी ऑल्सो. Okay. Please conduct more such sessions. Truly insightful. Thank you so much, Shridya. Great that you're learning from these sessions. Yuvraj is saying good command on language. Vaidehi was very confident. I face the same problem in explaining the Excel functions. Else I loved it. Siksha is saying awesome communication skills. Well done, Vaidehi. मेरा क्वेश्चन का आंसर कर दो. क्या है अभिषेक आपके क्वेश्चन? अवंतिका का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. So let me just unpin you first of all. Ma'am, I have few questions to ask regarding the same. अभी लेते हैं. I'm just gonna take a few questions that थोड़ी तारीफ तो पढ़ लो अपनी चैट में. Professional conduct, no hesitation, fluently given, great. How can we have good command on language, ma'am? She is ready for job also. ठीक है ना? Vaidehi. Sonu is saying, don't go for articleship, directly go for job, okay? On the lighter note. Clap for Avantika also. Yes, Avantika, I believe she's here. Avantika ने भी बहुत अच्छा confidently handle किया, but उसका disconnect हो गया, and I think she's not been able to join back. Some network connection issue, I believe. अच्छा, अभिषेक का क्वेश्चन ले लेते हैं. मैम, मेरा ट्रांसफर केस है, 6 मंथ्स हुए हैं, ग्रुप 2 का रिजल्ट वेटेड है, अटेम्प्ट्स भी ग्रुप 2 में 4 लग चुके हैं अब तक. मैं बिग 4 में जा पाऊंगा क्या, बिग 6 में? देखो, एक हद तक अटेम्प्ट्स नहीं मैटर करते हैं, राइट? बिग आर्टिकलशिप वाले जो हैं, जो बिग 4 वाले हैं, वो बोथ ग्रुप्स क्लियर कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है. आपका आर्टिकलशिप का ट्रांसफर केस है. ट्रांसफर केस में ज्यादा दिक्कत आपका जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है वो ज्यादा करता है. बिग 4 वाले इतने नाटक नहीं करते हैं. सिंस 6 मंथ्स ही हुए हैं, तो विद इन 6 मंथ फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम कोई नहीं आती है ट्रांसफर होने में. मेन जो है प्रॉब्लम फ्लो करती है वहां से, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है वो ट्रांसफर देते नहीं है यूजुअली, एंड दैट इज समथिंग दैट वी बीन ऑब्जर्विंग. इट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, बट दैट्स देयर. अदरवाइज अटेम्प्ट्स वगैरह एक पॉइंट पे अगर आप अपना जो 6 महीने का काम है उसको जस्टिफाई कर पाओगे, अपनी लर्निंग जो एबिलिटी है वो प्रूव कर पाओगे अभिषेक, तो दिक्कत नहीं आना चाहिए. अप्लाई तो जरूर करना है, और अगर सही बताऊं बिग 6 ना भी मिले ना, तो एटलीस्ट बिग 10 जरूर ट्राई करना, बिग 20 जरूर ट्राई करना. एसएस कोठारी, एसएनबी, टीआर चड्डा, ठीक है, जेसी भल्ला, ये भी बहुत अच्छी फर्म्स है. और जैसे ही आप इनसे आर्टिकलशिप करोगे, ट्रस्ट मी, बिग 4 में जाना आफ्टर क्वालिफाइंग बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनका जो स्टाइपेंड है वो एकदम बिल्कुल इनके लेवल का होगा, बट बीडीओ, मजार्स, टीआर चड्डा, एसएनबी, ये सब अच्छी फर्म्स हैं. आप जरूर इनमें डेफिनेटली ट्राई करना. ठीक है. हाउ वी डिस्कस फॉर एरियाज विच वी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस बट वी वांट जॉब इन इट. तो बढ़िया है फिर, प्रिंसिपल सर दे देंगे. तो चलो, कमिंग बैक टू वैदेही. सो वैदेही, पहली बात, ग्रेट कॉन्फिडेंस. आई लव योर कॉन्फिडेंस. आपने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर्स को हैंडल किया. डेफिनेटली देयर वर times when you were fumbling, when you were sort of doubting your preparation, but that's fine. That was just to test you, just to prepare you कि actually में कोई पूछे तो कैसे टैकल करना है. ठीक है. You're not able to unmute. Okay, लो. हाँ. Thank you, ma'am. So एक एक करके चलते हैं. इंट्रोडक्शन थोड़ा फास्ट बोलते हो बस आप, थोड़ा आपको रियलाइज हुआ होगा, थोड़ा फास्ट बोलते हो. ट्राई टू लोअर द टेम्पो. That's all. That's the only feedback that I have for your introduction. Why CA? I think
काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर था, मैंने इतना बढ़िया आंसर यूजुअली सुना नहीं है. सो गुड जॉब डन देयर, नो कंप्लेंट्स देयर. फैमिली बिजनेस, व्हाई नॉट बिजनेस, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड आई वुड से. जिस हिसाब से लाइक जैसे आप अगर इंटरनल ऑडिट के लिए जा रहे हो, इतना वैसे नहीं पूछते हैं जितना मैंने पूछ लिया. बट हाँ, थोड़ा सा अगर और प्रिपेयर करके जाओगे तो चांसेस क्लियर सिलेक्ट होने के बढ़ जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि For technicals सेलेक्ट in internal audit, मतलब इंटरनल आईएएस. ऑडिट का. हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें जैसे मैंने सोचा था मैं सॉक्स का भी पूछ लूं क्या, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाएगा. तो आई रियलाइज कि थोड़ा टेक्निकल आई थिंक और स्ट्रांग Ma'am, हो I think I'm जाएगा. a bit weak in the technicals of internal audit, so I have Yeah. to work on that. कोई नहीं, एक काम करो, हमारी ना इंटरनल ऑडिट की फर्स्ट लेक्चर फ्री में अवेलेबल है, तो वो देख लो आप. एटलीस्ट उससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, उतना भी करोगे. और उसमें हमने टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो वो डाउनलोड करके उनके आंसर्स फिगर आउट कर लो क्या आंसर्स हैं उनके, एंड देन एटलीस्ट उनको प्रिपेयर करके चले जाओ, उतना भी बहुत होगा. ठीक है. Okay. एक्सेल, ये आपकी जब दिखता है ना, जब ट्रांसफर केस होता है, सबसे पहला इंप्रेशन ये रहता है इसको थोड़ा काम आता होगा. ठीक है. तो एक तो सितंबर में ज्वाइनिंग था, आपने वो ठीक है बोल दिया. ये मत बोलना मैंने 1-2 महीने का छुट्टी लिया था, 1-2 महीने काम किया था. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने. अभी नवंबर में तो पेपर ही था, पूरा महीना उसी में चला गया. अक्टूबर भी गया नहीं होगा. सितंबर ही जो है आपने सिर्फ ज्वाइन करने के लिए कर लिया होगा. कुछ 15-20 दिन ही इफेक्टिवली काम किया है आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. उनको जो है आपको क्लियरली बोलना चाहिए था दैट एक्चुअली व्हेन आई जॉइन आई डिड नॉट वांट माय अटेम्प्ट टू गेट लेट, सो आई जॉइंड and I went there for like 15-20 days. And my initial work, the first phase of my training, the first phase, like for initial बोल दो कि हाँ बिल्कुल basic ही है. I was getting apprised with the kind of work that we do. I was trying to understand how the team structures work. सॉफ्टवेयर साइड बोल दो, टेक्निकल काम नहीं होता. तो बिग फोर वाले भी ज्यादा कुछ नहीं सीखते हैं फर्स्ट 6 months में. ठीक है, बस जस्टिफाई करना आना चाहिए. Okay. और So, ma'am, what are the points I can include, like that's in what I said. You can tell that yeah, I was learning about the works that we do. जो आपने वो बोला, I was learning about financial statements on Excel. थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे. आई बिलीव, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप उतना कॉन्फिडेंटली उसको बोल नहीं पाए थे, जस्टिफाई नहीं कर पाए थे. मुझे लग रहा था मैं पूछ लूंगी तो आप उसमें भी घबरा जाओगे. तो जो करा है एटलीस्ट उसको रिवाइज करके जरूर जाओ, जो भी काम आपने किया हुआ है. ठीक है, कि कहीं उसमें से कुछ पूछ ना लिया जाए. Okay. ठीक है संतोष, आई गेट. सो दैट बीइंग सेड, एक्सेल, आई थिंक एक्सेल में क्या है कि ना, जैसे आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन ये वी लुकअप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि लोग बता नहीं पाते कि अच्छा ये फंक्शन काम कैसे करता है. ठीक है. सो मेजर फंक्शंस जो है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सम में वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप. ठीक है. और आपका ये एक दो और है, भूल गई, मैं नाम भूल गई. नेस्ट, उनको जो है उनको बस देखो, Nested उनका if. लॉजिक, हाँ उनका लॉजिक देख के चले जाओ कि बोलना क्या है उसमें, एंड यू विल बी गुड इनफ. कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. आई थिंक दैट्स इट. बहुत अच्छा था आपका. मैंने आई थिंक स्ट्रेंथ्स भी आपने काफी अच्छे से बता दी थी, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं था. ओवरऑल वेरी गुड. यू डू स्टैंड अ चांस, टू बी ऑनेस्ट. यू वर कॉन्फिडेंट, यू हैड दी. बस थोड़ा सा और अगर उनको शोकेस कर पाओ ना, दैट आई वांट टू लर्न, आई वांट टू वर्क विद द टीम वेरी पैशनेटली, which you did also, but yeah, just be a little more energetic when saying that. Okay, that's Okay. that I think. Ma'am, one more thing. I think that I was repeating the same points again and again. Like I spoke the same thing in introduction, I spoke the same thing in my strengths, and I spoke the same thing in why CA, and then I spoke the same thing in why do you want to join EY. So हाँ, that happened. क्योंकि पता है जैसे आपने अपने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था उसमें थोड़ा सा आपने सॉफ्टर साइड ऑफ थिंग्स पे टच कर दिया. सो आई वुड से डू नॉट डू दैट. कीप इट फॉर द लेटर हाफ ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो कंपनी के साथ क्यों काम करना है, स्ट्रेंथ क्या है, उनमें वो आ जाएगा. तो जो आपका फिलोसफिकल एंगल था, जो आपने सॉफ्टर साइड ऑफ थिंग्स पे टच किया, आपका इंट्रोडक्शन ना, मैं बताती हूँ इंट्रोडक्शन को कैसे ब्रेक डाउन करो. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो आपका एजुकेशनल वाला है, सबसे पहले उसको रखो. ठीक है. और उसमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करो. सबसे पहले मान लो अभी आपने इंटरमीडिएट क्लियर करा है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एट दिस फर्म, इट्स बीन जस्ट 15-20 days सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग. इतना ही बोलो बस. ठीक है. देन आई क्लियर्ड माय ग्रुप 1 in May 23,
and I appeared for my BCom exam. First year I cleared, I got that much that much score. And then class 12th, that's it. 11th का बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 12 तक रखो, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सेकेंड फेज में आप बताओ that I'm currently looking for articleship, like what is your current status that. And थर्ड में आप जो है अपना पर्सनल चीजों के बारे में बताओ, अबाउट योर फैमिली एंड व्हाट आर योर पर्सनल इंटरेस्ट. कि आई लव टू रीड, in my free time I love to explore different books, or I like to write, I write poems, I write journal, or whatever it is. I like to cook, for example. So जो भी आपका इंटरेस्ट है, try to, so that वहां से जो है क्वेश्चन उठ जाए. So that's how you drive your interview. क्योंकि क्या है कि अगर मैं भी आपको इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने आपको बोला, आपने सबसे पहले क्या कर, आपने सबसे पहले वाला आपको सबसे ज्यादा ध्यान होगा, सबसे लास्ट वाला सबसे ध्यान रहता है. दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, राइट? एज अ लिसनर आई कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू हैव सेड. जो लास्ट वाला है वो मुझे हमेशा याद रहेगा. तो हमेशा कोशिश करना पहला वाला और लास्ट वाला जो पोर्शन है आपके आंसर का, वो बॉम्ब होना चाहिए, बीच में भर दो मसाला कुछ भी. ठीक है? लास्ट वाले पे से ही वो यूजुअली क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. ठीक है? सो ठीक है. Okay, हाँ. ma'am. सो रिगार्डिंग द रेपिटेशन, थोड़ा बहुत होता है, इट्स फाइन. जैसे कंपनी जो है, कंपनी के बारे में बोला जा रहा है तो कंपनी से ही रिलेटेड बोलो कि सच अ बिग ब्रांड, ग्लोबल प्रेजेंस है, यू नो. एंड वो वाली लाइन हमने बहुत अच्छी बोली थी, दैट व्हेन पीपल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 3 years of articleship, when they come out, you know, one can clearly identify वो कि भाई हाँ, that person has been in a good place. तो वो करके, and if you have any references within the big fours, you can mention that, you know, I've seen one of my friends who did articleship from EY, and the kind of person she is today versus the kind of person she was 3 years ago, there has been a major difference. And I was truly inspired by the growth she has gotten in these 3 years. ठीक है? कोई भी लिंक्डइन पे कनेक्शन बना दो और उसका रेफरेंस दे दो. Yeah, ma'am, I have few friends हाँ, तो with बस her फिर वो तो already. बेस्ट है, और कोई दिक्कत नहीं है. And ma'am, actually, I have had few attempts in my inter. So how, if I am asked about that, so how should I answer the same thing? कोई नहीं पूछता ऑनेस्टली. वो मतलब बहुत रेयरली कि भाई आज दिन खराब है, किस्मत खराब है, तो उस दिन पूछ लेते हैं. नहीं पूछते हैं कोई लोग. देखो, कई सिचुएशन है, जैसे जो बहुत टॉप एमएनसीज होती हैं, ये लोग तो मुंह पे पूछ लेते हैं कितने अटेम्प्ट लगे थे. सीए वाले उसके लिए, आर्टिकलशिप लेवल पे इतना नहीं पूछते हैं. नहीं दिक्कत होगा ज्यादा. ठीक है? आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया है, एंड आई एम मोर कंसर्न अबाउट दैट. मुझे नहीं पड़ी है कि आपने कितने अटेम्प्ट लिए, मुझे पड़ा है विल यू बी, जस्ट थिंक फ्रॉम द एचआर पॉइंट ऑफ व्यू. आई वांट कि क्या वैदेही मेरी फॉर्म में आके काम करेगी 3 साल, मेरे को रगड़ना है वैदेही को, करेगी ना वैदेही काम, बस फिर सिंपल. आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दैट. ठीक है? Okay, thank you so much, ma'am. And ma'am, any review for my CV, like which I have prepared? I have not. सीवी मैंने अभी ऊपर से देखा है. एक काम करो, मुझे ना टेलीग्राम पे भेजो, डिटेल वाला मैं वहां पर आपको भेजती हूँ. @Pooja Sharma, यू कैन टेलीग्राम मी, वहां पर आप मुझे सेंड करो, वहां पे मैं आपको थोड़ा वॉइस नोट बना के भेजती हूँ. लेट मी Okay, गिव ma'am. अवंतिका फीडबैक. संतोष इज टेलिंग मी दैट, हाँ, अवंतिका का फीडबैक दो जितना अवंतिका से मैंने सुना. अवंतिका, ओके, कैलीग्राफी, फैमिली, क्रिएटिव, YCA, रिस्पेक्ट. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अवंतिका का ज्यादा पोर्शन हुआ नहीं था, बट आई लाइक्ड हर कॉन्फिडेंस. सो you can give her this, pass on this message, Santosh, if you're listening. And I think I'd love to hear more from her in order to give more detailed feedback on her answers. ठीक है? And I guess, can we send your CV on Telegram? Yes, guys, you can send me, but trust me, मेरे पास बहुत resumes आते हैं पूरे दिन में. So अगर 2-4 दिन लेट हो जाए तो don't come at me, don't start telling कि भाई मैम तो रिप्लाई नहीं करती हैं. शिवम, ओ गॉड, शिवम ने तो पूरा भौकाल मचा दिया है चैट में, यूट्यूब चैट में. क्या मैं MBA नॉर्मल कॉलेज से करके जॉब करूं, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए? पहले बात ये बताओ, मुझे नॉर्मल कॉलेज कौन सा होता है? शिवम मौर्य, मुझे बताओ, मुझे जानना है ये नॉर्मल कॉलेज कौन सा होता है, अब नॉर्मल कॉलेज कौन सा होता है. सो गाइज, हाउ डिड यू लाइक टुडेज सेशन? प्लीज लीव फीडबैक. आज का सेशन हम क्लोज करेंगे यहीं पे ही.
Akash, I am going to conduct another interview, mock interview session, and I am going to definitely take yours as first. अपनी attendance, अपना जैसे वो बोलते हैं ना पर्ची पे नाम लिखवा दो, तो वो मैंने पर्ची पे नाम लिख लिया है आपका, and I'm gonna take your interview first, but please make sure that you're on time. Okay, Akash? So आज already late हो गया, I think 2 are enough, overload भी नहीं होना चाहिए. बाकी कोई भी फीडबैक चाहिए, connect with me on Telegram, connect with me on LinkedIn, guys. Connect with me on Instagram. Find me anywhere that you want, and let's connect there. वहां पर आप मुझे फॉलो कर लो, मैसेज भेजो. I'd also love to talk to you guys. I love interacting with new people, and I love helping out students at the most. So give feedback for today's session. Is there anything, कोई advice है मेरे लिए जो मेरे को आपको improve करनी चाहिए, so that you will feel कि हाँ ये better हो सकता था. So my Telegram, let me message everybody in the chat. You guys can hit me up on @Pooja Sharma on my Telegram. Thank you for your time. Naveen, thanks for, and it's totally nice and good inputs, ma'am. What needs to be done to start as an entrepreneur like you instead of going for a job? Naveen, let's connect on Telegram. Detail में बात करते हैं, I believe इस पे. LinkedIn ID, just find Pooja Sharma Thinking Bridge. I think my ID is gonna pull up there. Qualified in May 23 and I'm seeking Big Four. I am a fresher. Can you please guide me? Definitely, Shubhangi. Exactly doubt क्या है आपका? क्योंकि it will take only 10 minutes. Akash, एक काम करो, Telegram पे connect हो जाओ. Don't worry. Thank you so much, guys. I hope I was able to add some value to your life, and I believe ये जो 1 घंटा आपने मेरे साथ बिताया, it was worth it. Thank you so much for joining in, and I'll see you in the next live session. Bye bye. Take care. Good night.